After completion of ionization energy, we have started with electron affinity or electron gain enthalpy. You need to understand the terms what is meant by affinity and electron gain enthalpy. Affinity indicates the tendency to accept an electron. If an atom has a positive tendency to accept an electron, positive tendency to accept an electron का मतलब क्या है? It is willing to take that electron. If it is willing to take that electron, इसका मतलब the system is achieving some stability. If the system achieves stability, always there will be decrease in energy of the system. Here the decrease is because of release of energy or release of heat. Hence it is called as electron gain enthalpy. Whenever it is gaining an electron, the atom, what is the heat changes that are happening? Is it releasing energy or is it absorbing energy? If I am having a positive tendency to accept an electron, I will obviously release energy. Okay, so if electron affinity is positive, electron gain enthalpy will be negative, because exothermic reaction में energy negative होता है, endothermic reaction में energy positive होता है. Electron gain enthalpy, which is represented by delta H Eg, will be minus of electron affinity. ये वाला पहले आप लोग को clarity होना चाहिए. If the atom has negative tendency to accept an electron, मतलब whenever I'm putting an electron in the vicinity of the atom is not willing to take that electron. उस पर्टिकुलर केस में हमको क्या करना पड़ेगा? You need to put the electron forcefully into the outermost shell of the atom. So for that you are doing some work. You are putting the electron inside the atom. So if you are doing work, इसका मतलब आप लोग energy invest कर रहे हैं और delta H will be positive. Okay. ये जो first electron gain enthalpy रहेगा, in general, it is always exothermic. इसका मतलब क्या है? कोई भी एटम, कोई भी न्यूट्रल एटम को if you are giving an electron, it will readily take the electron. It is willing to take the electron because the system is achieving stability. System मतलब the atom along with the electron. Okay. So electron affinity is defined as amount of energy released when an electron is added into the outermost shell of an isolated gaseous atom. So equation में कैसे represent करेंगे? You are having a gaseous atom. You are giving an electron, it is converting into A minus gaseous. In the process, it is releasing heat. Okay. As this heat is a positive value, I am referring this to as electron affinity, because electron affinity is a positive value. If you don't want to show the heat in the equation, you can write that in terms of delta H. In that case, delta H is nothing but delta H electron gain, which is equal to minus Q, or which is equal to minus EA. Okay. The process, it is exothermic. An anion is formed during the process. It is called the reduction of the atom because you are giving an electron, and the units are electron volt per atom, joule per atom, kilojoules per mole, or kilojoule or kilocalories per mole. Okay. Unlike the successive ionization enthalpies, which are all endothermic, in case of electron gain enthalpy, only the first electron gain enthalpy is exothermic. Successive electron gain enthalpies are endothermic. मतलब पहला इलेक्ट्रॉन देते समय हमेशा एनर्जी रिलीज होगा, बट ऑन गिविंग फर्दर इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद इलेक्ट्रॉन्स देते समय always it will become endothermic. The reason is simple. Whenever you are giving the first electron, it is converting into anion. So if you are giving the second electron, you are giving an electron to that anion. Anion is negatively charged and the electron is also negatively charged. So there will be repulsive forces. So you need to put some extra energy in order to overcome these repulsive forces and place the electron in the outermost shell. So that amount of energy is, in this case, it is plus 844 kilojoules per mole. Okay. Or else overall, the process of putting two electrons, एक इलेक्ट्रॉन के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को साथ में कितना एनर्जी लग रहा है? ओवरऑल इट इज एंडोथर्मिक. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन देते समय एनर्जी रिलीज हुआ, ठीक है, बट सेकंड इलेक्ट्रॉन देते समय ज्यादा एनर्जी हमको इन्वेस्ट करना पड़ा. सो ओवरऑल द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक. ओके. सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीवैलेंट एनियन. पॉलीवैलेंट एनियन मतलब one which has having greater than one charge. Okay, 2 minus 3 minus वैसा. The process of formation of polyvalent anion is always endothermic. ये आप लोग को याद रखना है. Okay, ठीक है.
this is the general definition of electron affinity. Is the definition clear, everyone? What is exactly happening here? आयनाइजेशन एनर्जी के केस में इलेक्ट्रॉन्स निकालते समय क्या होता है वो देखा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में इलेक्ट्रॉन्स देते समय क्या हो रहा है वो देख रहे हैं हम. एंड व्हाट इज द नीड टू अंडरस्टैंड दीज टू, बिकॉज इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक बॉन्ड्स आप लोग पढ़ाई है ना 10th में. इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना, एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. इन ए वे वी आर लुकिंग एट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम. दूसरा एटम जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, we are looking at the electron affinity of that particular atom. Okay, so you need to understand these things in order to understand details of ionic bonding. Okay, ठीक है, कुछ एनालिसिस करते हैं. If I'm having a gaseous, if I'm giving an electron to it, it will convert into A minus gaseous, plus it will release electron affinity amount of energy. If you are writing the same equation in the opposite direction, उल्टा लिखो, A minus gaseous plus electron affinity gives rise to A gaseous plus electron. ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन जो है, दिस इक्वेशन इज फॉर आयनाइजेशन एनर्जी, राइट? यस सर. ओके, सो कैन आई से ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो इधर लिखा है मैंने, दिस इज नथिंग बट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ A माइनस. सो एक स्टेटमेंट में ये लिख सकता हूं, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मोनोवैलेंट एनियन, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मोनोवैलेंट एनियन, मोनोवैलेंट एनियन मतलब एक नेगेटिव चार्ज है, इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए न्यूट्रल एटम. ये क्वेश्चन आप लोग को कल एग्जाम में दिया था, ऐसा इक्वल्स द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मोनोवैलेंट एनियन is nothing but electron affinity of a neutral atom. Is this clear? Is the logic clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Similarly, if I write equation A gaseous, if I am putting ionization energy to this, I'll convert that into A plus gaseous plus electron. अभी इसी इक्वेशन को फिर से उल्टा लिखो, A plus gaseous plus electron gives rise to A gaseous plus ionization energy. Rather than writing ionization energy in this case, can I write it as electron affinity of A plus. A plus? So what can I write the statement as? Ionization energy of neutral atom equals to electron affinity of a monovalent cation. लिख सकता हूं? Are these two statements clear? Yes, sir. Okay. Let us then study the factors affecting electron affinity. Can anyone
tell me the factors affecting ionization energy. Factors affecting ionization energy, उसमें क्या क्या पढ़ा हमने? Z star, shielding effect, Shield. atomic radius, then the stability of the configuration and the penetration effect. याद है? Ionization energy is directly proportional to Z star. Directly proportional to Z star. Very good. Inversely proportional to shielding effect and inversely proportional to atomic radius. Atomic radius. Atomic radius. Based on the configuration, group 15 will have more ionization energy when compared to group 16, and group 2 will have more ionization energy when compared to group 13. That is because of penetration effect. Okay, इसमें भी वैसा ही कुछ देखेंगे. Z star. More is the Z star. Electron affinity. Electron affinity मतलब electron लेने की tendency ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? ज्यादा. तो जो न्यूक्लियस जितना ज्यादा स्ट्रांग है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन उतना ही इजीली या जल्दी आने के लिए कोशिश करेगा. इट विल हैव मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन. अगर न्यूक्लियस स्ट्रांग नहीं है तो it may not accept the electron so readily. Okay, so electron affinity जो है, it is directly proportional to Z star. Okay, next factor, shielding effect. Inversely proportional. इनवर्सली प्रोपोर्शनल. जितना ज्यादा शील्ड हो जाएगा, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन वो अंदर आने के बाद भी अगर उसको न्यूक्लियस नहीं दिखा, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कमिंग इनसाइड? ओके, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट. ओके, एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस Inversely proportional. इनवर्सली प्रोपोर्शनल. जो इलेक्ट्रॉन को आप लोग अंदर लेके आ रहे हैं उसको बहुत दूर बिठा रहे हैं. नॉट एन आइडियल सिचुएशन. ओके, जितना पास में रहेगा उतना बेटर होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. सो एटॉमिक रेडियस इज अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस. ओके, ठीक है. इनके अलावा again we need to understand stability of configuration. Stability of electronic configuration. Left to right, what happens to Z star? Increases. Increases. If left to right Z star increases, which will be having the greatest Z star? Noble gas. Halogens. Noble gas. Noble gas के लिए ना. But if you are taking noble gases, ये जो noble gases है, noble gases have least or zero electron affinity. You can say they have zero electron affinity. Reason क्या है? Because of their NH2 NP6 configuration. NH2 NP6 configuration जो है वो stable configuration है. इसका मतलब क्या है? If you are having noble gases, उस noble gases के बाजू में एक इलेक्ट्रॉन को रख दिया आप लोग, the electron will never be attracted by the noble gas, or it is having zero affinity. वो देखेगा ही नहीं उस इलेक्ट्रॉन को, उधर बाजू में करके उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. Okay, it has zero electron affinity. So in case if they are asking what is the electron gain enthalpy of noble gases, मतलब you are forcefully putting the electron inside the outermost shell of noble gases, तब आपको एनर्जी देना पड़ेगा ना. So the first electron gain enthalpy of noble gases is considered as positive, endothermic. Okay, if they are in that case electron affinity भी तब positive हो जाएगा, sorry negative हो जाएगा, जबरदस्ती से देना पड़ रहा है ना. Okay, if you are not giving the electron at all, we say it has zero tendency.
If you are forcefully giving the electron, in that case it will become negative tendency, or the electron gain enthalpy will become positive. Even the first electron gain enthalpy will be endothermic. समझ में आ रहा है? This implies in case of noble gases, everyone there in the lecture? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Case of noble gases, एक minute. Even the first electron gain enthalpy is endothermic. This implies electron is forcefully introduced in the valence shell. Is this clear? ठीक है. Next, ये तो noble gases के लिए हो गया ना. Noble gases have least or zero electron affinity. Similarly, group 2 elements. Group 2 elements have lower electron affinity values. They are having some positive tendency, but the tendency will be very less. Group 2 elements have lower electron affinity values due to NS2 configuration. Okay. NS2 configuration मतलब completely fill जैसा हुआ ना. वो जो S sub shell है वो completely fill हुआ है. Whenever I'm putting an electron, I will be disturbing that NS2 configuration. Hence, ये जो group 2 elements है, they will be having lower values of electron affinity. Okay. समझ में आया? Similarly, half fill configuration भी stable होता है. Group 15. Group 15 elements also have lower electron affinity values due to NH2 NP3 configuration. NH2 NP3 stable half filled configuration. Is this clear? क्या किन किन के लिए लो वैल्यूज है? नोबल गैसेस के लिए सबसे पहले उनको जीरो मानेंगे और एल्स उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंडोथर्मिक है. ग्रुप 2 एलिमेंट्स को you have lower electron affinity values because of their stable NS2 configuration. Group 15 also have lower electron affinity values because of their stable NS2 NP3 half filled configuration. Out of group 2 and group 15 किसके लिए कम रहेंगे? Out of group 2 and group 15 lower electron affinity values किसके लिए ज्यादा कम होगा? किसके लिए ज्यादा कम होगा? NS2. ग्रुप 2 के लिए ज्यादा कम होगा बिकॉज ग्रुप 2 के केस में वो तो completely NS2 configuration है, completely filled s orbital configuration.
further group 2 has lesser z star, right? उनका z star भी कम है. Group 15 तक आने तक, even though it is having a stable configuration, but it is having greater z star. So group 2 elements will have lower electron affinities when compared to group 15. Okay, I am disturbing the completely filled s orbital configuration as well as the z star in group 2 is less. Left to right z star बढ़ता जाएगा ना. Group 2 में z star कम रहेगा when compared to group 15. Is this clear? Yes, Yes, sir. sir. Okay. और दो points important है. In case of group 2, beryllium or magnesium have zero electron affinity. मतलब क्या हो जाएगा बताओ. Zero electron affinity का मतलब क्या है? If I am putting an electron beside them, they will not accept. They have zero tendency to accept the electron. So in that case, even the first electron gain enthalpy will become Endothermic. Positive. एंडोथर्मिक. Endothermic. जबरदस्ती से पुट करना पड़ेगा. ओके. बाकी एलिमेंट्स बेरिलियम मैग्नीशियम के नीचे जो भी एलिमेंट्स रहेगा, बेरियम स्ट्रोंशियम, उनके लिए यू हैव सम पॉजिटिव टेंडेंसी, बट बेरिलियम मैग्नीशियम के लिए द टेंडेंसी इज जीरो और यू आर हैविंग ए नेगेटिव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन. रीजन बीइंग, ये जो बेरिलियम है, व्हाट इज द शेल ऑफ बेरिलियम? इट इज सेकंड शेल. Yes, sir. Okay, magnesium में भी it has third shell. So whenever you are putting the electrons in the second shell or the third shell, because of the presence of already existing electrons, there will be more repulsive forces. बाकी elements में क्या होगा? Fourth shell में put करते समय इन electrons के बीच में distance ज़्यादा रहेगा. Okay, so उसके वजह से they are willing to accept the electron. But in case of beryllium and magnesium, because of their smaller sizes, whenever I'm taking an electron and whenever I'm bringing an electron inside their outermost shell, the repulsive forces are more dominant. Electrons के बीच में, when compared to the attractive force of the nucleus with the incoming electron. इसके वजह से उनका even the first electron gain enthalpy will become endothermic. समझ में आया? The reasons are basically, देखो, सबसे पहले उनके लिए कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है because I am disturbing that completely filled s orbital. Okay. दूसरा, उनका z star भी कम है. Okay. So उन केसेस में उस पर्टिकुलर ग्रुप में बेरिलियम और मैग्नीशियम में क्या हो रहा है? Further there is a small size of the atom. Because of the small size of the atom, if you are putting an electron, already existing electrons are having some repulsive forces. Those repulsive forces are dominant when compared to the attractive force of the nucleus with the incoming electron. Hence these two elements are having zero electron affinity. Is this clear? नहीं तो आप लोग ये याद ही रख लेना. In the periodic table, the elements having zero electron affinity क्या क्या है? नोबल गैसेस के लिए तो जीरो है. अभी हमने किनके लिए देखा? बेरिलियम और मैग्नीशियम. These two are also having zero electron affinity. They will never readily accept an electron on their own. Is this clear? Yes, sir. Okay. Similarly in group 15, देखो ग्रुप 15 में भी जैसे हम ग्रुप 2 में देखा वैसा ग्रुप 15 में देखा तो only nitrogen has zero electron affinity. नाइट्रोजन को जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है. इफ यू आर कंपेयरिंग दैट ग्रुप 2 एंड ग्रुप 15 है, ग्रुप 2 में दो एलिमेंट्स को जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है. बेरिलियम को भी है, मैग्नीशियम को भी है. नाइट्रोजन में केवल नाइट्रोजन को है जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नाइट्रोजन फैमिली में. फॉस्फोरस को नहीं है. दिस कैन बी एक्सप्लेन बेस्ड ऑन द इंक्रीज इन जेड स्टार ऑफ ग्रुप 15 है. ग्रुप 2 में क्या है? जेड स्टार भी कम है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा है. ग्रुप 15 में क्या हुआ? In case of shell 2, the inter-electronic repulsions are more.
बट शेल 3 हो जाएगा ना फॉस्फरस में. फॉस्फरस में शेल 3 होते होते थोड़ा साइज बढ़ा और ग्रुप 15 का Z स्टार भी ज्यादा है. As a result, the phosphorus is able to have some positive electron affinity. Is this clear? थोड़ा सोचो. ग्रुप 15 के केस में क्या हुआ? Z स्टार भी बढ़ चुका है. उसके वजह से if I'm putting the electron in the third shell, the interelectronic repulsions are not so dominant when compared to the attractive force of the nucleus with the incoming electron. In case of group 2, even in third shell, there is significant repulsive forces when compared to the attractive force of the nucleus with the incoming electron. Okay. Group 15 के केस में phosphorus में वो दिख नहीं रहे because of the increased Z star. Is this clear? Yes, sir. So overall मैं एक statement लिखता हूँ, आप लोग को वो याद रखो काफी है. Okay. In periodic table, elements with 0 electron affinity or positive first electron gain enthalpy. कौन कौन है? Noble gases, beryllium, magnesium, nitrogen. Clear? Clear है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, I hope this is clear to everyone. Is this clear, everyone? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Okay. Okay, so tell me the general order then. If I'm taking period 2 elements, can you tell me the elements of period 2? Lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. Which will have the highest electron affinity? Fluorine. Okay, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद Oxygen. उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद Carbon. उसके बाद बोरॉन, उसके बाद Lithium. लिथियम, उसके बाद Nitrogen. नाइट्रोजन को रहेगा, उसके बाद Beryllium. बेरिलियम, Radium. हैव नियॉन. Neon. रीजंस क्या है फॉर दिस? Star. ये Stable नाइट्रोजन कम, configuration. इसलिए हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हाफ filled p subshell. In case of beryllium, it is 2s. fully filled s subshell. Noble gas. This is noble gas configuration or octet complete configuration. NH to NP6 configuration is called as octet. Is this clear? ठीक है. Yes. So the group
Sir, एक मिनट, ये कंप्लीट हो जाने दो. Group with highest electron affinity. 17. Halogens. Halogens or group 17. Configuration is NH2 P5. 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 Okay, ठीक है. हाँ, पूछो आर्या. sir, 3D5 होगा 3D हाफ फील्ड तो सेम सिचुएशन होगी. 3D half filled, same situation होगी. Whenever you are having that 3D5 configuration, you are putting the electron in the outermost shell, Arya. So वो वाला केस कभी आता नहीं है हमें. Don't worry. 4s to 3D5 configuration है ना. If you are putting an electron, you will be putting the electron in the inner shell. Sorry, you will be putting the electron in the outermost shell. So Okay, don't sir. worry. And moreover, we will, in general, we will not discuss electron affinities for the D block. Okay, sir. D block elements के लिए देखते नहीं है. Okay, Okay, sir. ठीक है. Is this clear then, everyone? Shall we go to exceptions? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So एक बार factors affecting electron affinity फिर से समझ लेते हैं. Electron affinity indicates the tendency to accept an electron. Okay. So if it is having greater Z star, it will be having greater Z tendency. This is according to the general trend. Shielding जितना ज़्यादा हो जाएगा, the electron won't be willing to come inside the nucleus, sorry, inside of the atom. So electron affinity will be inversely proportional to shielding effect. जितना ज़्यादा atomic radius हो जाएगा, फिर से that incoming electron, as it is far from the nucleus, may not have so much willingness to come into the atom. Okay. So atomic radius is also inversely proportional to electron affinity. In case of electronic configurations, noble gases, as their configuration is already NH2 and P6, which is a stable configuration, it will never accept an electron, or it has zero tendency to accept an electron. So in those cases, you need to forcefully put the electron inside the atom. So the electron gain enthalpy, even the first electron gain enthalpy, will become endothermic. Group 2 and group 15 elements has lower values of electron affinities. They are positive, but they are lower values. But in case of beryllium, magnesium, and nitrogen, their sizes being small, even the first electron affinity for them is taken as 0. Size छोटा रहने की वजह से, if the electron is coming inside, because of the presence of already available electrons, there will be repulsive forces. Okay, those repulsive forces are more when compared to the attractive force of the nucleus and the incoming electron. So इसके वजह से electron affinity क्या हो रहा है? 0 हो रहा है. Okay. And group 2 के केस में beryllium और magnesium तक वो effect है because of their lesser Z star. Group 15 के केस में only in case of nitrogen the electron affinity is 0. Phosphorus के केस में नहीं है because the Z star got increased in group 15. Okay. ठीक है. Then we have seen the general order. General order आप लोग को I think it is clear. Okay, let us see the exceptions. Exceptions of electron affinity are very, 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 very important. ध्यान से देखो, बहुत बार रिपीट हुआ है. फर्स्ट एक्सेप्शन का क्वेश्चन नीट में, जेई मेंस में बहुत बार रिपीट हुआ है. Okay. If you take group 17 halogens, you have fluorine, chlorine, bromine, iodine. What is the expected order of electron affinity? What is the expected order of electron affinity? Fluorine, chlorine, bromine, iodine. Fluorine greater than chlorine, greater than bromine, greater than iodine. Right?
because down the Yes, group atomic radius increases, electron affinity decreases. Decreases. आपको जनरल ट्रेंड रुको, पहले जनरल ट्रेंड प्लॉट करवाता हूँ. General trend of electron affinity, left to right, what happens to electron affinity? Increases as general trend. As Z star increases, top to bottom electron affinity decreases Decrease. as atomic radius increases. Okay. Yes. So based on that, for group 17, fluorine, chlorine, bromine, iodine, what should be the expected order of electron affinity? Fluorine greater than, chlorine greater than, bromine greater than, iodine. This is the expected order. yes. I will give you the actual order. आपके knowledge के हिसाब से try to give a reason for that. Actual order में chlorine is greater than, bromine is greater than iodine. फ्लोरीन जो है उसका थोड़ा कम रहेगा क्लोरीन के कंपैरिजन में. टेल मी द रीजन फॉर दिस. सोचो, सोच के बताओ. See where you are putting the electron in fluorine and chlorine. Smaller size of atom. Because of the smaller size of the atom. Very good. If you Strong take, inter-electronic repulsion. if you take fluorine, the electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p5. Okay. 2p5 matlab the electron is added to second shell. Okay, second shell no भी 2p में add कर रहे हैं. If you are taking chlorine, atomic number 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. In this case, electron added to third shell. Okay, so फ्लोरीन के केस में सेकेंड शेल में ऐड करने के वजह से the repulsive forces, second shell size being small, the repulsive forces will be more. Because of the greater repulsive forces, the electron affinity or electron लेने की tendency, it becomes slightly less when compared to chlorine. Very important exception. क्या है reason क्या है? Due to lesser interelectronic repulsions, in 3p in comparison to 2p subshell. Okay, second shell has smaller size when compared to the third shell. Second shell में electrons जो है पास में रहने की वजह से repulsive forces ज़्यादा रहेगा. Hence the electron affinity will be decreased. Is this clear? Is this clear, everyone? Can you repeat? Yeah. The expected order. जैसे हमने नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में बात किया ना, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू जो है वो कम है. वो कम क्यों है? बिकॉज यू आर पुटिंग द इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड शेल. सेकंड शेल में रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा रहेगा बिकॉज ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स. Similarly, in this case also, fluorine, chlorine, bromine, iodine, expected is fluorine should have the greatest amount of electron affinity. But in case of fluorine, you are putting the electron in the second shell. Second shell, ठीक है, Z star ज़्यादा है, size कम है, atomic radius कम है, so incoming electron जो है nucleus से पास में रख रहा हूँ मैं. But already present electrons will have more repulsive forces, which are being more dominant when compared to the attractive forces. Okay. So overall वो जो attractive force है relatively थोड़ा कम हुआ है और repulsive forces की वजह से.
क्लोरीन के केस में वो थर्ड शेल में पुट करने की वजह से थर्ड शेल ऑलरेडी बड़ा है ना, रिपल्सिव फोर्सेस उतना ज्यादा नहीं रहेगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, सो अट्रैक्टिव फोर्सेस से बहुत ज्यादा है, अट्रैक्टिव फोर्स विद द न्यूक्लियस। समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. इतना ही सोचो। Yes, sir. इसमें इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में पुट कर रहा हूँ, शेल बीइंग स्मॉल रिपल्सिव फोर्सेस आर मोर। इसमें इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में पुट कर रहा हूँ, शेल बीइंग लार्ज, रिलेटिवली लार्ज, रिपल्सिव फोर्सेस आर लेसर। सो इसमें जाने के लिए ज्यादा टेंडेंसी शो करेगा इलेक्ट्रॉन व्हेन कंपेयर्ड टू द फ्लोरीन सेकंड शेल। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, ग्रेटर देन ब्रोमीन, ग्रेटर देन आयोडीन। Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next exception for group 16. Group 16. What are the elements of group 16 oxygen family? Oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. Okay. Yes, sir. Again, the expected order is oxygen must be highest. This is the expected order. Actual order में क्या होता है? Sulfur greater than, selenium greater than, tellurium greater than, polonium greater than, oxygen. अभी ऑक्सीजन देखो, जो पहले एक्सपेक्टेड था, सबसे पहले रहना चाहिए था, वो सबसे लास्ट में चला गया। Again, the reason is same. Repulsive forces are more in the second shell. But फ्लोरीन के केस में देखो, it has shifted only one place. फ्लोरीन लास्ट में तो नहीं गया, फ्लोरीन जस्ट क्लोरीन के बाजू में ही गया। बट ऑक्सीजन के केस में देखो, it has gone to the last position. Reason is फ्लोरीन में Z स्टार भी ज्यादा है, और Z स्टार ज्यादा होने की वजह से लेफ्ट टू राइट Z स्टार इंक्रीजेस ना। ऑक्सीजन और फ्लोरीन के कंपैरिजन में फ्लोरीन में Z स्टार ज्यादा है। Because of the greater Z star, it has shifted only one position. ऑक्सीजन में Z स्टार भी कम होने की वजह से सबसे लास्ट चला गया। रिपल्सिव फोर्सेस भी ज्यादा है सेकंड शेल में, और Z स्टार भी कम है। समझा? Z star is also less in oxygen than in fluorine. Hence, the position shifted to last. Okay? समझा? Yes. Okay. ये तो रीजंस हो गया। रीजन से ज्यादा आप लोग को ये ऑर्डर पूछा जाएगा। इन केस ऑफ फ्लोरीन एक्सेप्शन 1 और जो ग्रुप 17 में they will ask you the reason to. Group 16 में even though they ask you the reason, what is the reason for this, the reason is only the interelectronic repulsions in the second shell. आप लोग को ऑप्शन में यूजुअली वही दिखेगा। ओके, बट लास्ट चला जाने का रीजन क्या है? और जो Z स्टार है वो भी कम है, रिपल्सिव फोर्सेस भी ज्यादा होने की वजह से, और सबसे लीस्ट हो गया। I hope this is clear. I will give you a question. Please solve that. Chlorine, sulfur, phosphorus, silicon. Tell me the decreasing order of electron affinity. Easy question है. Tell me the decreasing order of electron affinity. सर क्लोरीन सबसे बड़ा, क्लोरीन सबसे ज्यादा। ओके, फास्फोरस, फॉस्फोरस, Sulfur. सल्फर हाँ सल्फर, उसके बाद सिलिकॉन सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस सबसे कम है। शिव प्रसाद, फॉस्फोरस के पीछे पड़ गया तू।
Sorry, phosphorus sir. is group 15 है. Okay, group 15 elements का कम रहेगा. So chlorine greater than, sulfur greater than, silicon greater than phosphorus. Is this clear? This is group 17, group 16, group 14, group 15. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आसान ही है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ऑर्डर्स लिखने में. सर ये ग्रुप कौन सा है, वो कैसे मतलब देखने का? ये ग्रुप्स आप लोग को याद रखना है पीरियोडिक टेबल में, ऑलरेडी समझाया बताया. यू नीड टू लर्न एलिमेंट्स ग्रुप वाइज फॉर ग्रुप 1 2 13 14 15 16 17 18. अब तक ये हो जाना चाहिए. You need to know all the elements of group 1, group 2, मतलब S block हो गया, P block हो गया. Learn as boron family, carbon family, nitrogen family, oxygen family, halogen. Nicogens. Okay, halogens, oxygen, fluorine family, noble gases. Okay. सल्फर जो है वो ऑक्सीजन फैमिली है, सिलिकॉन जो है वो कार्बन फैमिली है, क्लोरीन फ्लोरीन फैमिली, फास्फोरस जो है नाइट्रोजन फैमिली. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आज आप लोग होमवर्क जैसा लो. यू नीड टू नो ऑल फैमिली मेंबर्स. ओके, नेक्स्ट सेक्शन कंबाइंड एप्लीकेशंस. Combined applications of electron affinity and ionization energy. ये दोनों के बारे में पढ़ा है ना, इनका एप्लीकेशंस के बारे में देखते हैं. फर्स्ट एप्लीकेशन in deciding the metallic character. Deciding the metallic character. Okay, what is meant by metal? A metal is something which loses electrons easily, or it is a source. Yes, sir. It is a source of free electrons. If it is losing electrons, a metal usually form a cation. Okay, a cation is formed by loss of electrons. ये जो loss of electrons जो भी है, removal of electrons, it is studied by the property of ionization energy. So in order to have a good metal, what should be its ionization energy? कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? ज्यादा. कम ज्यादा ionization energy है तो electron बाहर नहीं आएगा. In that case, it won't be a metal. कम. You need to have less ionization energy. Ionization energy must be less. So if you are analyzing the trend of metallic character, left to right, what happens to metallic character? Decreases. Decreases. It decreases. Left to right, metallic character decreases. Reason क्या है? As ionization energy increases. Top to bottom, what happens to metallic character? Increases. Increases as ionization energy decreases. Why does ionization energy decrease top to bottom? Number of shells. increase in number of Increase in number of shells or Atomic increase in radius. atomic radius. Very good. Very good. Okay, this is about metallic character. What is meant by non-metal then? Opposite. Gains electron. Gain of Gains electrons. electrons. Non-metallic character. Anion. If you are having a non-metal, it will have the tendency to form an anion. इसका मतलब
it will gain electrons. If it is gaining electrons, what property must be high? Electron affinity. Electron affinity. Electron affinity values must be high. So what will be the general trend in a group as well as in a period? Period increases. Electron affinity increases. Left to right. Non-metallic character, left to right, Increases. Increases. electron affinity Yes. increases as, okay, the non-metallic character increases as electron affinity increases. Top to bottom, it decreases as electron affinity decreases. Electron affinity decreases because of increase in size. Clear? Are these two applications clear? So in the Yes, sir. periodic table, सबसे लेफ्ट में आप लोग को metals रहेगा, सबसे राइट में आप लोग को non metals रहेगा. Top to bottom, the metallic character increases or the non-metallic character decreases. Okay? Yes. ठीक है. Next point. Reducing agent strength or reducing agent nature, abbreviated by RAN, or oxidizing agent. Nature, abbreviated as OAN. Reducing agent and oxidizing agent natures. What is a reducing agent? What is a reducing agent? नाम में ही है. What is meant by It reduction? First of all, itself gets देगा तो सबसे Electron. पहले ये लिखते हैं. Reduction क्या होता है? Everyone. Oxidation क्या होता है? Reduction is nothing but gain of electrons. gain of electron. Oxidation is nothing but loss of electrons. Okay. उसके बाद you need to understand reducing agent. Reducing agent, and you need to understand what is meant by oxidizing agent. Okay. Reducing agent जो है, it reduces others. Reducing agent reduces others and it gets oxidized. Reducing agent जो है, itself gets oxidized. If it is getting oxidized, इसका मतलब electrons lose कर रहे हैं, gain कर रहे हैं. Lose. Yeah. This implies it will Lose. lose electrons or there will be loss of electrons. If it is having loss of electrons, what property you need to consider for the reducing agent? Ionization. Very And, good. You need to think about ionization energy. Oxidizing agent क्या करेगा? It oxidizes others. Gain of electron. Oxidizes Self gets reduced. others. Very good. Itself gets reduced. So इसका मतलब there will be gain of electrons. Electron This affinity. gain of electrons, you need to think about electron affinity. Okay. So एक बार general trend देख लेते हैं. Reducing agent nature. Reducing agent nature के लिए आप लोग को क्या देखना है? Ionization energy देखना है. Left to right, what happens to ionization energy? Increases. So what will happen to reducing agent strength? increase. Increases. Increase. Increase.
फिर से Increase. left to right, what is happening to ionization energy? Increases. It increases. If the ionization energy is increasing, will it readily lose electrons? No. No. It is not No. losing electrons, it is not getting oxidized. If it is not getting oxidized, it is not acting as a proper reducing agent. So left to right, what happens to the reducing agent strength or reducing agent nature? Decrease. Decrease. Decreases. Decreases. Reason क्या है? As ionization energy increases. Top to bottom, what happens to reducing agent nature? Increase. Increases. Reason? As As electron. Electron. IE decreases. I decreases. ionization energy है, electron कहाँ से आ गया? शिव प्रसाद? As ionization energy decreases. Okay? Yes. This is for reducing agent nature. Oxidizing agent nature के लिए? Oxidizing agent nature के लिए you need to comment based on electron affinity. O, A, N. Left to right, what happens to oxidizing agent nature? Increases. Increase. Increases. Reason? As Electron affinity increases. Increases. top to bottom, what happens to oxidizing agent Decrease. nature? Decreases. Electron affinity decrease. Electron affinity decreases. Clear? Yes, sir. ये combined applications, पहले 3 applications clear है. Metallic nature, non-metallic nature, reducing agent strength, oxidizing agent strength. First, understand what is meant by reducing agent. Reducing agent reduces others. Itself gets reduced. Sorry, itself gets oxidized. Oxidized. If it is getting oxidized, it is losing electrons. If it is losing electrons, ionization energy must be lesser. Oxidizing agent oxidizes others. Itself gets reduced. इसका मतलब it has to gain electrons. If it is gaining electrons, its electron affinity values must be good. Left to right, electron affinity increases. So oxidizing agent strength increases. Top to bottom, electron affinity decreases. So oxidizing agent strength decreases. Left to right, ionization energy increases. So reducing nature decreases. Top to bottom, ionization energy decreases. So reducing agent strength increases. Clear? Yes, sir. Sir, Yeah. Sir. Any doubt? No, sir. No, sir. sir. Okay. आप लोग ये भी कुछ पढ़ा होगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा. नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. Yes, sir. सो राइट हैंड साइड पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड जो भी एलिमेंट्स रहेगा, आर दे नॉन मेटल्स और मेटल्स? Non-metals. Non-metal. ऑक्साइड्स क्या होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा? Acidic. Acidic. में यू हैव मेटल्स और नॉन मेटल्स. क्या? लेफ्ट हैंड साइड में पीरियोडिक टेबल में यू हैव मेटल्स और नॉन Metals. Metals. मेटल्स. सो उनका ऑक्साइड क्या होगा Basic. Basic. ना? सो लेट अस एनालाइज द ऑक्साइड्स. बस कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं. Oxides of third period. Third period में you have sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine. So sodium forms an oxide, Na2O. Magnesium forms MgO. MgO. Aluminium Al2O3. सिलिकॉन SiO2. SiO2. फॉस्फोरस दो ऑक्साइड्स बनाता है, P2O5 P2O5. एंड P2O3. सल्फर भी दो ऑक्साइड्स बनाता है, SO3 एंड SO2. क्लोरीन का बहुत सारा ऑक्साइड्स अवेलेबल है, Cl2O7, Cl2O5, Cl2O3, Cl2O. Okay. Out of these oxides, Na2O and MgO
These are basic oxides. Okay. Al2O3 जो है, this is an Amphoteric. amphoteric. Very good. Amphoteric का Amphoteric. मतलब क्या है? It has Both. Occasionally properties basic and of acidic nature. both Both acidic oxide characters. and basic oxide. Okay. Behaves as both acidic and basic oxide. Okay. यहाँ से यहाँ तक ये सारे oxides. These are non-metallic oxides. These are acidic in nature. Acidic. Okay. Or else I can say, और एक statement जैसे लिख रहा हूँ, acidic oxides follow non-metallic character basic oxides follow metallic character. Okay. And ये acidic और basic हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं. Like suppose if you are having Na2O, it is called as basic oxide ना. इसका मतलब क्या होता है? If you are dissolving that Na2O in H2O, पानी में मिला रहे तो you will form a base. It will convert into NaOH. Similarly, if you are dissolving MgO in water, it converts into base MgOH twice. Or if you are taking P2O5 और P2O5 को आप लोग पानी में मिलाओ H2O में, you will get H3PO4. You will get H3PO4. बैलेंस करते हैं थोड़ा. ये वाला 2 हो गया तो this will be 3H2O. Right? Yes, sir. Okay. ठीक है. अभी इसमें और एक पॉइंट भी मैं ऐड करना चाह रहा हूँ. अभी ये जो P2O5 जो है, it is also called as anhydride of H3PO4. Anhydride का मतलब क्या है? After removing all the water molecules present in the H3PO4, जो भी बचेगा, that particular entity is called as anhydride. अभी H3PO4 में water molecules तो directly निकाल नहीं पाएंगे, because if you are removing H2O from H3PO4, you will be left with HPO3. So क्या करना है? Multiply this with 2, then you will get, एक बार सभी लोग ऑब्जर्व करना, you will get H6P2O8. Okay. Now can you remove H2O? If you are removing 3H2O minus 3H2O, बनेगा क्या? You will get P2O5 ना? So that P2O5 is called as anhydride of H3PO4. Hello, everyone there in the lecture? Yes, sir. Yes, sir. Sir. I will give you some acids. I will give you some acid. Tell me the anhydride of it. Anhydride मतलब you need to remove all possible water molecules. Remove करने के बाद जो भी formula मिलता है, that is called as anhydride. HClO4 का anhydride बताओ. HClO3 का anhydride बताओ. HClO2 anhydride. HClO anhydride. Tell me the anhydride of
H2SO4 anhydride of H2SO3 anhydride of HNO3. HClO4 is called as, these names are important. HClO4 is called as perchloric acid, which we will learn in inorganic chemistry. But अभी के लिए आया है ना, याद रख लेना. Perchloric acid. HClO3 is called as chloric acid. HClO2 is called as chlorous acid. HClO hypochlorous acid. H2SO4 तो आप लोग को पता ही होगा, sulfuric acid. H2SO3 is sulfurous acid. HNO3 is nitric acid. What is this P2O5? P2O5 is called as anhydride. Anhydride of H3PO4. HClO4 का anhydride मिला आप लोग को? ClO5. ClO5 है. देखो आप लोग को करना क्या है, in HClO4 if you want to remove H2O you have only one hydrogen ना, so multiply this with 2 first. तब फॉर्मूला क्या आएगा आपको, H2Cl2O8, राइट. H2Cl2, एक के लिए मैं समझा रहा हूँ फिर से. You will get the formula as some H2Cl2O8. इसके अंदर से H2O हटा दो, तब बचेगा क्या, Cl2O7 ना. O7. So Cl2O7 is the anhydride of HClO4. मतलब जब Cl2O7 को पानी में मिलाता हूँ मुझे HClO4 आएगा. HClO3 का anhydride क्या होगा, again multiply that with 2, H2Cl2O6, so that will be Cl2O5. O5. ClO2. Okay, next I think it is Cl2O3 plus H2O. Yes, sir. This is Cl2O Cl2 plus H2O. H2SO4 तो आसान है, H2O डायरेक्टली हटा दिया तो SO3 बचेगा. SO3 SO3 plus H2O. This is SO2 plus H2O. HNO3 के लिए बताओ. Again you need to multiply with 2. 2O5 5 plus H2O. Okay. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. यहाँ तक ही करते हैं. In the next lecture we will start with electronegativity. ये आप लोग का बस आइडिया देने के लिए दिया है, metallic oxides, non-metallic oxides, acidic or basic, and how to identify that. If you are putting them inside water, they will be forming either a base, if it is a metallic oxide. If it is a non-metallic oxide, it will be forming an acid. HClO4, H3PO4, ये सब acids है. NaOH, MgOH twice, these are bases. And इसमें और एक terminology भी आप लोग को in general question papers में दिखेगा. What is the anhydride of HClO4? मतलब किसको पानी में मिलाने से आप लोग को HClO4 मिलेगा, Cl2O7. In order to get the anhydride from the respective acid, remove all H2O molecules present inside it. If you are not directly seeing the H2O, multiply that with some number, तब H2O दिखेगा, तब निकालो. आया समझ में? I hope this is clear to everyone. Yes, sir. Can you tell me the last? Can you tell me the anhydride of H2CO3? CO2 CO2. 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 When you are dissolving that in water, you will get H2CO3. Is this clear? Yes, sir.
Okay, thank you Yes, everyone. sir. We will meet in the next lecture then. Thank you so much. Bye, sir.